I'm gonna do very natural makeup, daytime, everyday makeup. So firstly I'm going to start with orange corrector. You can skip this part, but I do have dark circles, so yeah. And now blend, blend, blend and blend. After that, I am using LA Girl Pro Concealer in the shade Beige. Wherever I need a little bit coverage, just a little bit. प्रोडक्ट कम यूज़ करना है, बट उसको ब्लेंड बहुत 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 ही अच्छे से करना है. Now I'm using LA Girl Pro BB क्रीम एंड ये मेरा फेवरेट क्रीम है. काफ़ी टाइम से मैं इसे यूज़ कर रही हूँ. एंड अगर आपको थोड़ा बहुत कवरेज चाहिए तो आप ये यूज़ कर सकते हैं. एंड आप इस पार्ट को स्किप भी कर सकते हैं. अगर आपको बहुत ज़्यादा कवरेज चाहिए तो आप फाउंडेशन यूज़ कर सकते हैं. बट आई थिंक डे टाइम के लिए बीबी क्रीम एक परफेक्ट ऑप्शन है. Now blend, blend, blend and blend. Now I'm taking my compact powder, K Beauty compact powder. ये मैंने फर्स्ट टाइम ही यूज़ किया था एंड ये मुझे काफ़ी अच्छा लगा. सो आई वुड हाईली recommend you guys. I took a सेम ब्रांड का ही ब्लश, K Beauty ब्लश. सो सेम ब्लश ही मैं अपनी लिप्स पर भी अप्लाई करने वाली हूँ एंड ऑन माई आईज एज वेल. लिक्विड हाइलाइटर लिटिल बिट. मैं यूज़ कर रही हूँ कीकू का हाइलाइटर एंड माय सेकंड फेवरेट हाइलाइटर जो है वो है मेबलिन वन. तो दोनों ही प्रोडक्ट्स का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा. जस्ट टू ऐड सम कलर मैं ऑरेंज कलर का आई शेडो यूज़ कर रही हूँ. कोई भी यूज़ कर सकते हैं. क्रीज में सिर्फ क्रीज में यूज़ कर रही हूँ कलर ऐड करने के लिए. अब मैं यूज़ कर रही हूँ शुगर का काजल. आप कोई भी काजल यूज़ कर सकते हैं, बट जस्ट अ लिटिल बिट आउटर एरिया में.
एंड जस्ट वेट नहीं करना है, उसके बाद ही मैं इसे ब्रश की हेल्प से स्मज कर दूँगी। फटाफट से आपको स्मज करना है, वेट नहीं करना है। आई रियली डोंट नो हाउ टू डू प्रॉपर ब्राउज, सो जो भी गैप्स हैं मैं सिर्फ उन्हीं को फिल कर रही हूँ। Now I'm using ये last step है setting spray and that's it. I hope आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। I am ready you guys। अब मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बाय।